Good evening. Hello and welcome to Viewpoint. I'm Anusha Soni. We continue to track Cyclone Biparjoy, which is inching closer to the Gujarat coast and is likely to make a landfall very shortly. On your screen right now, these are the latest visuals that my colleagues are getting for you. My colleague Vinaya Deshpande, Navjot, reporting from the ground about the 350-kilometer long stretch, the western coastline of India and also the coastline of Pakistan is going to be affected. This is a tropical cyclone which has affected numerous districts and parts of Gujarat and Maharashtra, certain coastal regions. You already know that the NDRF and the SDRF teams have been deployed at various locations and more than about 80,000 people have been relocated to safer zones. No loss of life reported so far. Unfortunately, the track record of India to deal with such cyclones in the past as well is something we'll see consistently here as well. There'd be damage to property, that's inevitable, but the administration, the state and the central government have pulled up their socks to ensure that there is no loss to the life that happens. On your screen right now, heavy winds followed by rainfall. That's the nature of a tropical cyclone which really works in. But how does this cyclone really look like? The eastern coastline and the western coastline of India is where traditionally the cyclones are. They are far more intense in the eastern coastline, but even in the western coastline along this coast, along the Arabian Sea, we have seen various cyclones in the last few years. You could look at this pressure area, these lines going around, that's the pressure area, and it's affecting parts of Gujarat, parts of Maharashtra and also parts of Pakistan. That's what it's going to do. That's how the cyclone is developing, and we are expecting in the next 2 hours, that's what the weather department has said. It's likely to make a landfall very, very shortly. As we told you earlier, red alert has been issued for Saurashtra and the Kutch coast today as Gujarat braces for one of the worst cyclones that has hit the state in the last 25 years. As we get you all the details here on CNN News 18, let's have a look at the ground reports which are coming in. ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि वहाँ तबाही हो सकती है। मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर किस तरीके से। ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है, लेकिन जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और अभी तो समय है, लैंडफॉल में समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये जो लोग अभी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है जिसको लेकर के केंद्र सरकार तैयार है, गुजरात सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए कि द्वारका वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, और यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई थी, जो इस वक्त तकनीक है, उस तकनीक के जरिए सब कुछ देखा जा सकता है। मुझे 1998 का जो कांडला बंदरगाह पर तूफान आया था, वो तस्वीरें मैंने देखी, वो तस्वीरें देखी और अपने अनुभव कर पा रही हूँ कि जो चक्रवात को वेरी सीवर कैटेगरी में रखा गया था, उसका मतलब क्या होता है, इसको इतना बड़ा खतरा क्यों कहा जा रहा था, ये अब हम महसूस कर पा रहे हैं और यहाँ पर कल्पना नहीं थी कि ऐसा मंजर होगा। We are right now in Dwarka, where the speed of winds is making it impossible to even stand at a specific location and hold on to your position. My video journalist Rajesh Sapre and I, both of us, are finding it a bit difficult to keep standing and to keep holding grounds even as
The wind speed due to Cyclone Biporjoy as it comes close to a landfall has only been increasing. Over 75,000 people have been moved to safety till now, is what NDRF says. Of them, close to 10,000 from Dwarka alone, the place where I am right now. Let us try and show you the visuals around this place. This is Dwarka, where you're continuously seeing heavy rainfall. You know, all the pots have come down and fallen and broken. There's a pillar that was standing here, which you can see right now, has come down. The tin sheds that are there on this particular hotel and establishment, you know, we can see that the bamboo which is holding those tarpaulin sheets is already loosening up. The flow of the wind as well as the incessant rainfall, you can see the impact of it all due to Cyclone Biparjoy as it comes closer to a landfall. My video journalist Rajesh Sapre is showing you the trees that are being impacted due to the cyclone. Also, you know, we are right close to the seashore. As you can see, the barricading to the electric box that is there, even that is being shattered. It's being cemented to the ground, but that cement holding is also shattering due to the speed of the winds, as you can see here. So it's becoming increasingly difficult to stand and to give out information of the kind of mayhem that is being caused due to the cyclone. We are just a few meters away from the sea, but the visibility of the sea is also getting affected. If I can request my video journalist to show you, there's a tremendous swell in the sea. We can see the waves from where we are standing. The level of sea has risen. मांडवी में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद खराब हो रही है। मांडवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत तेज बारिश यहाँ पर अब शुरू हो गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए किस तरह से ये पूरी सड़क जो है वो खाली है। आपको सिर्फ एक कार नजर आएगी और बारिश इतनी ज्यादा है कि इस पूरी सड़क पर आपको धुंध नजर आएगा। यहाँ देखिए हवा बहुत तेज चल रही है। यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहूंगा कि जरा दिखाएं वो हवाओं को पेड़ के जरिए दिखाएं कि किस तरह से जो पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो किस तरह से हिल रहे हैं, झुक रहे हैं बाकायदा। ये देखिए तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए बहुत स्थिति अब हम शहर की दिखा रहे हैं। ये स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है विंड्स की, ये विंड की स्पीड बहुत ज्यादा नजर आ रही है। और देखिए लोग यहाँ, कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे, वो किस तरह से यहाँ पर एक तरफ खड़े हो गए सड़क से बचने, इस बारिश और हवा से बचने के लिए। ये देखिए यहाँ कुछ महिलाएं और बच्चे जो हैं वो सड़क के किनारे छिपे हुए हैं, लेकिन हम स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं अब यहाँ शहरों में वो असर दिखना शुरू हो गया है जिस बात की आशंका थी। आशंका ये थी कि तूफान जब आएगा तो नुकसान हो सकता है, और वो अब यहाँ पर उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखनी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कच्चे घरों को होता है, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप ज़रा ये इस सड़क को देखिए, पूरी तरह से ये सड़क खाली है, पूरा शहर बंद है। कुछ एक लोग हैं जो इन सड़कों पर निकल रहे हैं, या तो कहीं से जा रहे हैं, या फिर मीडिया के लोग इन इलाकों में घूम रहे रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे सब जो पूरे मार्केट है, जो होटल्स हैं, वो सब आपको बंद नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत, आपके सवाल को मैं नहीं सुन पा रहा।
यहाँ पर तेज हवाएं जिस तरीके से चल रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस अनुभव की कोई बात कर रही थी आप, अनुभव वेके में मैंने भी कई साइक्लोन यहाँ पर कवर किए, लेकिन इस समय पर जो इस तरीके से तेज हवाओं के साथ, क्योंकि अब तक जो साइक्लोन रही या तो देर रात को या अर्ली मॉर्निंग आई, ये अभी शाम का वक्त है, और उस समय पर यहाँ से इतनी तेज हवाओं के साथ खासतौर पे 115 के 120 किलोमीटर, हालांकि वो इतनी फिलहाल अभी इतनी स्पीड नहीं होगी, लेकिन जब हिट होगा यानी कुछ ही घंटों में जब जखौ से यहाँ से गुजरेगा, उस वक्त उतनी ही 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होगी। ऐसे में मुश्किल होता है वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर, कच्चा स्ट्रक्चर उसके सामने नहीं खड़ा रह पाता। आसपास के इलाकों में चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बाकी जो जरूरी जो चीज़ें थी, जो बेचने वाली चीज़ें थी, उन सबको यहाँ पर फिलहाल बंद करा दिया है। देखिए यहाँ पर किस हद तक हवाएं चल रही है। Jakhau Port, that's where Cyclone Biparjoy is expected to make a landfall. The visuals on your screen right now, my colleagues getting you this story as it progresses. Well, from the time in the 90s when any kind of cyclone of this nature, whether in the east coast or in the west coast, claims hundreds or sometimes thousands of lives, to a point where we have safely evacuated 75,000 people to safe locations. It's a story of how India's disaster management system has progressively responded in a very efficient manner. All the areas which are directly under the red alert have been evacuated. People have been moved to safer locations, as I said earlier. Red alert has been issued for Saurashtra, Kutch coast, in the state of Gujarat that braces for one of the worst cyclones that the state has seen in the last 25 years. The authorities, as I said, successfully relocated individuals. The loss of property is something that one cannot avert. But as far as the loss of life is concerned, that has been completely controlled. And that is exactly something that has been the trajectory of India in the last 10 to 15 years. Once again, cutting across to some ground reports. बिपरजॉय साइक्लोन कच्छ के जखौ में लैंड होने की संभावना जताई है। दोपहर के बाद ये प्रोसेस शुरू होगी। इससे पहले आप देख सकते हैं कि द्वारका का इलाका है जो इफेक्ट होने वाला है, और साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से हवाएं तेजी से चल रही है, तेजी से बारिश भी हो रही है, और आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल, ये जो द्वारका का बीच है जहां लोग आते जाते रहे, लेकिन आज ये हालत देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। इससे पहले ये द्वारका में तेजी से हवा चल रही है, और जो यहाँ से प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है, जो साइक्लोन से पहले जो करना था काम वो भी खत्म कर दिया है, और साइक्लोन के बाद भी जो करना है उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखी है। लेकिन आज दोपहर के बाद 5 बजे के बाद लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिपरजॉय थोड़ा स्लो हो गया है और जखौ के आसपास वो लैंडिंग करने वाला है। Well, as the cyclone is inching closer to the Gujarat coast, the Indian Coast Guard has also made all the arrangements to deal with any untoward incident, God forbid. Weather warning broadcasts will be done by the ICG ships. There are aircrafts, radar stations to warn all the mariners. It has been ensured that all the fishing boats in the area, especially the areas which are most vulnerable, are returned to safer locations. Oil handling agencies, because it directly affects the Arabian Sea. All oil handling agencies were also sensitized to prepare for contingencies. 15 ships are ready at multiple locations at different configuration. And as I said, the Indian Coast Guard has taken stock of the entire preparedness. Helicopter operation facilities have been activated, especially at Okla, Jakhau and Vadinar areas for quick response in the Kutch district. Cutting across to my colleague Vinaya Deshpande. Vinaya, help us understand what's happening on the ground. How severe is the storm right now? Well, right now the situation is really worsened. We can see that the wind speed has continuously been growing. Rainfall has been growing. I am here at Dwarka. All right, Vinaya, take care as you report all the details and developments. I am here at Devbhumi Dwarka, and as you can see, it is impossible to maintain our balance. We can see that the poles have come down, the gates have come crashing. There is heavy destruction everywhere. The wind speeds are almost impossible to sustain right now. My video journalist Ajay Sapre is showing you all the dramatic visuals of the action on field as Biporjoy continues to close in
towards the landfall on the coast of Gujarat. We are seeing that there is massive destruction around everywhere. The speed of the wind has only been growing incessantly. Even bigger vehicles are finding it difficult to navigate through this. We are trying to get you the ground situation here at Devbhumi Dwarka, and we are seeing that there is a continuous surge in the wind speed. As of now, authorities tell us that over 75,000 people have been rescued to safety. But Section 134 has been enforced in several low-lying areas, several coastal areas of Gujarat. Plus, the cyclone is, coming close to a landfall. I don't know if you can hear. I can hear you just fine. I can hear you just fine, Vinya. We see your reporting and also the reporting that your video journalist is putting forward. Please go ahead. We continue to listen to your reporter. It's really difficult to stand steady at this location. You're seeing that the wind speeds have been rising very, very fast, leading to a massive destruction. As you can see on your screen, the dramatic visuals of the destruction that is being My colleague Vinaya Deshpande reporting from the ground. These are winds which can be up to 150 kilometers per hour. About a 350-kilometer long stretch has been affected along the western coast of India. It also includes certain parts of Pakistan. We showed you that on the map. The disturbances that have been building in. Vinaya Deshpande reporting from Dwarka in Gujarat. And imagine a situation and a scenario where a person is finding it very difficult to stand because the wind speed is very high. These are, of course, very challenging situations for any journalist to report into. Vinay, I'm coming back to you. We can see you in the visuals, how difficult the situation is right now. Talk us through these visuals. So we continue to stay with the visuals that Vinaya is sending us, and because of the bad weather conditions, we seem to have lost the audio of Vinaya Deshpande. But imagine the work that the video journalist has to do at this point in time. When you can't stand steady, it's a camera that has to stand steady in the winds which are blowing so fast. The areas around, you can see they have been affected. The trees will tell you the speed of the wind and the kind of evacuation operations that have been done by the authorities in the vicinity. Vinaya Deshpande reporting that's the area where the cyclone is expected to make a landfall. My colleague Navjot is also reporting from the ground. There are strong winds. Homes have been damaged. Storm intensifies as we talk you through these visuals emerging from the coast of Gujarat. The authorities have been put on a very high alert. Strong winds, heavy rains have lashed parts of Gujarat as Cyclone Biparjoy approached the coast of the state and is likely to make a landfall very, very soon. Once again, dipping into the ground reports. बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि महातबाही हो सकती है। मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर किस तरीके से। ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है, लेकिन जिस तरीके
रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये जो लोग अभी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है जिसको लेकर के केंद्र सरकार तैयार है, गुजरात सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि द्वारका वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था, जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था, और यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई थी, जो इस वक्त तकनीक है, उस तकनीक के जरिए सब कुछ देखा जा सकता है। मुझे 1998 का जो कांडला बंदरगाह पर तूफान आया था, वो तस्वीरें मैंने देखी, वो तस्वीरें देखी और अपने अनुभव कर पा रही हूँ कि जो चक्रवात को वेरी सीवर कैटेगरी में रखा गया था, उसका मतलब क्या होता है, इसको इतना बड़ा खतरा क्यों कहा जा रहा था, ये अब हम महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कल्पना नहीं थी कि ऐसा मंजर होगा। Different parts and districts of Gujarat have been affected. Those are the visuals coming in from different parts. There's a close watch that the Indian Coast Guard has also maintained along the western coast. There are helicopters and different facilities that have been set up. One has also ensured that there are no ships or any kind of maritime activity which is happening at this point in time. Over 70 to 80,000 people have been moved to safer locations. Biporjoy is very soon expected to make a landfall, and the disaster management system here in India has responded very efficiently. We'll continue tracking the story here on CNN News 18. The visuals on your screen right now. We're slipping into a very short break.